Hello everyone, very good evening to all of you. So today we are live with a very important update from the Quebec Ministry for all students who have been waiting for the results from Quebec. So while I'm just waiting for some of you to join in, very good evening to all of you. So I will not be taking much time on this live. It will be a very short live for a very important update that we have from the Quebec Ministry for students. जो भी wait कर रहे हैं for results from the province of Quebec, जिन्होंने भी files लगाई हुई है Quebec province में, पिछले साल से लगाई हुई है, सितंबर 21 के लिए लगाई है और बहुत सारे students ने files lodge करी है before May 21 for the upcoming intake. I mean, before 15th May 2021. So last 3-4 days में हमने observe किया है कि कुछ request letters आ रही हैं from for applications which were submitted for the province of Quebec. ये जो request letters हैं, ये passport submission request नहीं है, ये request letters हैं in the form of a notification जो कि आपको आएंगी for your application. हम expect कर रहे हैं कि in the coming days काफ़ी Quebec जो इंस्टीट्यूशन सस्पेंड हुए थे उनके लिए भी ये लेटर्स आएंगी. एज पर द रिपोर्ट्स एंड द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव, जो अभी तक लेटर्स आई हैं, कुछ तो उन स्टूडेंट्स के लिए आई हैं जिन्होंने सितंबर 21 के लिए फाइल लगाई थी और कुछ उन स्टूडेंट्स के लिए आई है जिन्होंने पिछले साल से फाइल लगाई हुई है. सो रिक्वेस्ट लेटर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर स्टूडेंट को पूरा करना है और CIC को, जो कनेडियन काउंसिल है, जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट आपकी फाइल्स चेक करती है, उनको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं बिकॉज वो रिक्वायरमेंट प्रोविंशियल क्यूबेक मिनिस्ट्री से आई है. सो जो फर्स्ट ऑप्शन, जो फर्स्ट पॉइंट है, जो कि क्यूबेक मिनिस्ट्री की तरफ से लेटर जो आएगी, जो आपसे मांगा जाएगा, वो होगा जो भी बच्चे डेफर कर रहे हैं अपना intake, that they are moving from one intake to the next intake and then to the next intake, जिन्होंने भी क्यूबेक में अपनी फाइल लगाई है, उनको अपना नया LOA which is obtained from your designated learning institution in Quebec, वो सबमिट करना होगा कनेडियन हाई कमीशन को. इस न्यू ऑफर लेटर के ऊपर आपकी न्यू स्टार्ट डेट, कोर्स का नेम, कॉलेज का नेम, ऑब्वियसली जो भी आपके नॉर्मल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पे होता है वो सारी डिटेल्स होनी मैंडेटरी है. ये लेटर आपको डायरेक्टली अपने DLI से लेनी है. इसके साथ दे आर ऑल्सो आस्किंग यू टू सबमिट अ न्यू स्टडी प्लान. नाउ व्हाट इज अ स्टडी प्लान? स्टडी प्लान इज नथिंग बट योर कवर लेटर और योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. तो अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फाइल क्यूबेक में लगाई हुई है या जो फाइल क्यूबेक में लगाने का सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है बिकॉज अभी तक कोई रिजल्ट या कोई नोटिफिकेशन ही नहीं थी क्यूबेक मिनिस्ट्री से, बट रिसेंटली उन्होंने रिक्वेस्ट लेटर्स फ्लोट की हैं. इन रिक्वेस्ट लेटर्स में आपको कुछ चीज़ें सबमिट करनी है. उन चीज़ों की डिटेल हम इस स्लाइड में दे रहे हैं. द फर्स्ट वन इज न्यू LOA, अगर आप कंटिन्यूसली अपने इनटेक को डेफर करते आए हैं, प्लस अ न्यू स्टडी प्लान. तो न्यू स्टडी प्लान में इज नथिंग बट योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और योर कवर लेटर और योर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, जिसमें आप लिखेंगे कि आप डेफर क्यों कर रहे हैं बार बार, आप कब से डेफर कर रहे हैं, कब आपने अपनी फाइल लॉन्च की थी, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं इसलिए डेफर कर रहे हैं, और फ्यूचर बेनिफिट्स क्या होंगे अगर ये आप अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएँ क्यूबेक से इन द कमिंग टाइम. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आप मेंशन करें अपने स्टडी प्लान में और अपनी न्यू LOA, ये दोनों को आप सबमिट करेंगे एज पर रिक्वेस्ट लेटर जब आपकी रिक्वेस्ट लेटर आएगी. दे not everybody has to do this, but you have to be ready with this. Now there are some students who are studying online. Now this is second category of students. कुछ students हैं जिन्होंने study online ऑप्ट नहीं किया and they simply moved to the next intake. वो continuously खुद को defer कर रहे हैं.
थोड़े टाइम पहले बहुत ये न्यूज़ चल रही थी कि अपनी एप्लीकेशन को आप विड्रॉ करिए। कॉलेजेस बोल रहे थे कि आईआरसीसी से नोटिफिकेशन है कि जितने भी क्यूबेक में बच्चे अभी तक अपना नहीं आया है रिजल्ट्स, उनके को अगस्त तक रिजल्ट मिल जाएंगे एज पर द कॉलेजेस इंटीमेशन। नाउ सम स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सीक्ड रिफंड्स फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने नए डीएलआई में अप्लाई कर लिया है। कई बच्चों के लिए नया डीएलआई क्यूबेक में ही है। तो जो अगर आपका नया डीएलआई क्यूबेक में है तो आप वहाँ का न्यू एलओए और न्यू स्टडी प्लान सबमिट करिए। जिन बच्चों ने विड्रॉ कर लिया है वो क्यूबेक, sorry, this slight internet issue. Yeah, so we are back. All the students who are studying online for a Canadian institution in Quebec, जिनके रिजल्ट्स अभी तक ऑन होल्ड है, उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर दिया है, सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट कर दिया। इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपके लिए भी एक लेटर आने वाली है जो कुछ बच्चों के लिए आ चुकी है। इन दैट केस आप अपना न्यू एलओए तो सबमिट नहीं कर सकते क्योंकि आपने 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट किए हैं। आप अपना एनरोलमेंट लेटर सबमिट करेंगे, आप अपनी मार्कशीट्स, ग्रेड शीट्स सेमेस्टर 1 एंड 2 की सबमिट करेंगे और आप भी एक स्टडी प्लान सबमिट करेंगे, अपना कवर लेटर सबमिट करेंगे कि वाई यू शुड गेट योर रिजल्ट सून इनफ। आप कब से वेट कर रहे हैं और आप पढ़ने के बाद अच्छा स्कोर कर रहे हैं कि आपने इतनी पेशेंस रखी हुई है एंड यू शुड बी गिवन योर रिजल्ट एज सून एज पॉसिबल। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो रेडी रहें एनरोलमेंट लेटर के साथ जो आपके कॉलेज के पोर्टल से निकल जाती है या फिर जो आप अपने कॉलेज से रिक्वेस्ट करके मांग सकते हैं। आपका सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 का एनरोलमेंट लेटर कि आप एनरोल कर चुके हैं, आपका टिल डेट फी पेमेंट मतलब कि जितनी 2 सेमेस्टर्स आपने कंप्लीट किया वो फी आप पे कर चुके हैं, वो वाली डिटेल्स और आपका ओरिजिनल ऑफर लेटर, ये सारी डिटेल्स आप प्लीज इकट्ठी रखिए ताकि जैसे ही आपको कोई लेटर आती है आप ये डिटेल्स अपलोड करेंगे। Now they are asking for a very important thing to all the students who submitted files in Quebec because Quebec में जो ऑडिट चल रहे थे उसका रीज़न ही यही था कि कई लोगों ने सही तरीके से अपनी फीस ट्रांसफर्स नहीं की, कई लोगों ने फेक ऑफर लेटर्स किसी तरह प्रोड्यूस करी हैं जो भी कहीं ना कहीं पकड़ी गई थी। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस Quebec ministry has become more careful and they want to make sure कि सिर्फ जो genuine students हैं वही उन्हीं को अब रिजल्ट्स दिया जाए। तो आपसे मांगा जाएगा confirmation of fee payment and how your fee payment was made to your college in Quebec. तो आपको रेडी रहना है उन बैंक स्टेटमेंट्स के साथ जिसमें से आपकी फीस ट्रांसफर की गई थी, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू की गई हो चाहे डायरेक्ट आपने वायर ट्रांसफर करी है कॉलेज को। तो जौन सी बैंक स्टेटमेंट से आपकी फीस कटी थी उस बैंक स्टेटमेंट को बैंक से लीजिए, मैनेजर स्टैम्प करें उनको और साइन करें बैंक मैनेजर, उस पे हाईलाइट हो फी अमाउंट जितना क्यूबेक के कॉलेज में गया है, चाहे वो थ्रू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या हाउएवर है डायरेक्टली वायर किया है। साथ के साथ स्विफ्ट कॉपी, कॉलेज को फीस ट्रांसफर करने के बाद बैंक एक स्विफ्ट कॉपी जनरेट करता है, तो स्विफ्ट कॉपी और जिस बैंक अकाउंट से आपकी फी पेमेंट हुई है प्लीज उसकी बैंक स्टेटमेंट को रेडी रखिए। जैसे ही आपको लेटर आती है आपको ये चीजें सबमिट करनी पड़ेंगी। वेरी इंपॉर्टेंटली जहां से भी आपने फीस दी है वो वही ट्रैक करना चाहते हैं कि क्या आपने जेन्युइनली कॉलेज की फीस पे करी है कि नहीं करी है। नेक्स्ट दे आर ऑल्सो वांटिंग टू सी कंफर्मेशन ऑफ हु इज फंडिंग योर स्टडीज। सो इसका क्या मतलब है कि वो देखना चाहते हैं कि क्या आपकी फैमिली की सच में ये फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है कि वो आपको फ्यूचर में भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इन द कमिंग इनटेक, इन द सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर भी सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। फॉर दिस आपको अपनी पेरेंट्स की इनकम टैक्स रिटर्न्स, 6 मंथ्स की सैलरी स्टेटमेंट्स, आइडली 3 मंथ्स की चल जाती है बट यू कैन हैव 6 मंथ्स। अगर सैलरी स्टेटमेंट्स नहीं है तो आप सैलरी सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं बैंक से और अपने कंपनी से, अपने पेरेंट्स की कंपनी से जहाँ वो काम करते हैं। ये सब चीज़ें आपको सबमिट करने की रिक्वायरमेंट होगी इन द कमिंग टाइम। जिन बच्चों के पेरेंट्स एग्रीकल्चर में हैं वो जे फॉर्म्स और इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें। अगर उन्होंने भी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किया सो दैट्स अ वेरी गुड way of proving your financial stability.
अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल फंड्स है लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, अगर आपने अपनी फाइलिंग के टाइम पे दिखाए भी थे, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। ये जो डिटेल्स जा रही हैं वो क्यूबेक मिनिस्ट्री में जा रही हैं, तो आपको फंड्स शो करने हैं लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, योर पीपीएफ्स और योर जनरल प्रोविडेंट फंड्स. So you have to show your income tax returns of your sponsors. These will be your parents ideally, because इन्होंने ही आपकी फीस ट्रांसफर की होगी. अगर वो पेरेंट्स नहीं तो वो ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, एंड मे बी योर एनी फर्स्ट रिलेटिव which has a blood relationship with you, और जिन्होंने आपकी फीस ट्रांसफर में, आपकी कोई भी फंड ट्रांसफर में जिनके अकाउंट से किया हो, तो ये सब आपके स्पॉन्सर्स हैं और इनके डॉक्यूमेंट्स लगने बहुत ही ज़रूरी हैं इन द कमिंग टाइम. तो अगेन आई एम रिपीटिंग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्यूबेक में फाइल्स अभी भी रिजल्ट्स अवेट कर रही हैं और वो वेट कर रहे हैं फॉर द रिजल्ट्स, यू हैव टू बी रेडी विद योर न्यू LOA which has been received for September 21, a new study plan, means a new SOP कि आप क्यों जाना चाहते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में और आप अभी तक क्यों वेट कर रहे थे, आपने स्विच क्यों नहीं किया, आप क्यों क्या एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में अगर आप ये कोर्स उस इंस्टीट्यूशन से कंप्लीट कर लेते हैं. जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उनको अपनी LOA पुरानी वाली रेडी रखनी है, उनको एनरोलमेंट लेटर, फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स और कब तक की फी पेड है, इनसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं along with the cover letter again. And for all of you, they will be asking to submit the proof of funding and the proof of fee payment, कि किस तरह से और कहाँ से आपकी फी गई थी to these institutions आपके कॉलेज में, और किस तरह की फंडिंग आपके पास अवेलेबल है इन योर होम कंट्री in order to be able to have a stable financial income for funding you in the coming years. So these documents, letters are all, to prove, to take a proof as to you have done all transfers genuinely, because we all have to understand कि क्यूबेक ने CAQs कुछ institutions के लिए suspend क्यों किए थे, because they were not sure of the authenticity of these fee payments or recruitments or quality student recruitments happening to these institutions. The numbers were much higher than that were actually reported to have been granted a letter of admission. It means कुछ कहीं ना कहीं fake हुआ है जिसकी वजह से ये institutions audit में आए हैं और अभी भी उनके केस चल रहे हैं in the court of law. So with these letters, the ministry is trying to support the students and they want direct answers from you, because if you are not able to show your proof of fee payment, means आपने सही तरह से fee payment की ही नहीं है. In that case, your file could face a refusal and even result into a 5-year ban. So that is our viewpoint on the new request letters that are coming for students जिनकी Quebec में files अभी भी stuck हैं. So that was in a nutshell, on the request letters that are coming for students for Quebec. There are some questions which are slightly deviating from this topic, but I'll still take them. In Canada Study Visa, it is not good to show new funds. Please don't do that. At least 4 months old fund आप दिखाइए. अगर आप आज भी अपने अकाउंट में फंड्स रखते हैं तो 4 months ओल्ड आप इजीली फंड्स कर पाएंगे और आप सितंबर इनटेक के लिए फाइल लगा सकते हैं बाय अगस्त बिगिनिंग, राइट? सो प्लीज डोंट शो फंड्स as new as 2 months old. वो यूके में चलता है 1 month old फंड, कनाडा में नहीं चलता है. अगर आपके फंड्स 4 months old हैं और या 3 months old हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, देन बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट दिखा दीजिए और बैंक स्टेटमेंट अवॉइड करिए. एटलीस्ट it will show that you have funds. Another important thing is that if you've sold a property and the funds have recently come into your account for which you made a FD या recently आपके account में funds आए हैं, तो उनको हम new funds नहीं मांगते हैं. अगर आप property की sale deed साथ में दिखाएंगे और amount transfer होता दिखाएंगे अपने account में, then you can easily get that will be considered as old for you if it's a property sale amount.
See, exactly. So, Cheshta, I'm just trying to tell you that recently some request letters have come, not just for our company, but across in this industry for Quebec held files. And we've got some results for two or three, you can say, from the files which were for last year. And recently, the files which were submitted before May 15, 2021, there have been some good results from Quebec on those files, because those files were probably for the colleges which were not under CAQ suspension. That's why. So, Quebec Ministry has started issuing results. Let's be assured of that. After BA with good percentage, just PG program of hospitality management relevant course. It depends, Bayant, what all courses do you have in BA? Do you have any experience in hospitality or not? If you don't have any experience in hospitality and you are just doing a normal BA, then HRM is a good course too, human resource management. आप वो भी try कर सकते हैं. Otherwise, usually Bachelor of Arts के student hospitality लेते हैं, but you need to check your marks in BA. Since you said it's good percentage, so it's not a bad option at all. But your statement of purpose has to be really strong. Okay. Gurvansh, if you have applied, your course choice is not wrong. Your maths marks are low, that's okay, but we've got visas for lower mathematics marks also into the same course. Please focus on your statement of purpose. A good statement of purpose can actually help you get great visas results. So it can turn a negative result into a positive result. You really need to explain why you took this course, why did you have low marks, and how you can manage such a course, a technical course, even with those low marks. So I don't know if your case is or each IELTS 6. So yeah, so it's a SDS case. Try showing some funding along with your file. अगर SDS है तो भी आप थोड़ी funding show करें, वो आपकी file को strong करती है. By funding I mean fees plus GIC के additional भी कुछ funds आप please show करने की कोशिश करिए. So this was basically about the Quebec results. What I want to also take on is that Canada is going to get a little flexible on its quarantine policies. So if you've been vaccinated, fully vaccinated with a particular vaccine which is authorized by Canadian government, then you may be totally free or relaxed on the quarantine. Even those who are not vaccinated or those who are partially vaccinated will have to undergo the quarantine policies. Will have to be take up the quarantine place, but it will be just like for 7 days and not as long as 14, considering you get tested negative on the 8th day of test. So that's another good news coming from Canada, and we will also talk about that in another video or live that we will do, talking just about travel restrictions and relaxations in terms of traveling to Canada. So regarding Quebec, if you have any questions, just feel free to WhatsApp me or email. We'll try to get back to you as early as we can. And regarding students who are waiting for traveling, कि biometrics नहीं हो रहा है या medical नहीं हो रहा है या आपके further कोई भी action नहीं हो रहा है आपकी files पे. See, if your medical is not happening and if you have a non-SDS file, you can file your non-SDS case without a medical, because medical is not a necessary pre-requirement for submitting file under non-SDS. So medical नहीं है, non-SDS file submit कर सकते हैं. But please remember, Davinder, yes, if it's a non-SDS file, you may go ahead and lodge your file without medical. Biometrics. बायोमेट्रिक्स के बिना बहुत ही अनलाइकली है कि आपके फाइनल रिजल्ट आएगा. बायोमेट्रिक्स मस्ट होता है टिल टुडे आल्सो फॉर योर रिजल्ट्स. इफ यू आर गेटिंग एनी रूमर और न्यूज दैट यू विल गेट results finally without biometric, nothing is official as of now, so we have to wait for biometrics to get the final results on our applications. College open, BCom 59, PGDCA open 2020, completed 16 to 71st company's account executive.
I'm taking gadgets world question. Or you've taken supply chain management. In your SOP, if you are able to correlate your chosen course to your previous work profile, there are very high chances of a success on your visa. I hope that you have done something related to supply chain management in your work profile. So if you've done so, and if you have noted that in the SOP that you've submitted, this is not a problem. Your cases shouldn't be a problem. But as an accounts executive, if you have not, if your job duties, अगर आपने अपनी job duties letter दी है जो अपनी file के साथ, job duties बहुत important होती है, because as a visa officer, suppose आप किसी company में account executive हैं. अब अगर आप एयरटेल में अकाउंट एग्जेक्टिव है और आप एक हनीवेल में अकाउंट एग्जेक्टिव है, तो आपका काम बहुत डिफरेंट होगा. तो जॉब ड्यूटीज भी हर पर्टिकुलर कंपनी की डिफरेंट होती है. आपकी जॉब ड्यूटीज के बेसिस पे ही वीजा ऑफिसर इजीली डिसाइड कर सकता है कि कौन जो कोर्स आपने चूज किया है वो सही है कि नहीं. तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे वर्क एक्सपीरियंस वाले होते हैं, हम उनको डेफिनेटली बोलते हैं कि आप अपने जॉब लेटर में जॉब ड्यूटीज जरूर डिफाइन करवाएं. दिस विल हेल्प the visa officer understand if you have made the right course choice, because visa officer also might not be from the same background of what you are choosing to study. So if you used to handle logistics and if you have mentioned that in your job duties letter and your SOP, you are good to go. Devinder, so there are some students who are confused as what is medical can be done with IMEI. So there are two kinds of medical examinations that are held. The first kind of medical examination is upfront medical examination, which is done without getting any intimation or letter from the Canadian High Commission. आप अपना मेडिकल की वो ले लेते हैं अपॉइंटमेंट पैनल फिजिशियन से, आप जाते हैं अपना मेडिकल कराते हैं, आपको एक लेटर मिलती है जिसपे UMI नंबर लिखा होता है, वो अपनी फाइल के साथ लगा देते हैं. दिस इज नोन एज एन अपफ्रंट मेडिकल एग्जामिनेशन. Now there is a letter, in some cases and in some countries rather, upfront medical examination नहीं होता है. हम लोग फाइल लॉन्च करते हैं विदाउट दैट. जब फाइल लॉन्च हो जाती है तो एक रिक्वेस्ट लेटर आती है विद IMEI नंबर मेंशन ऑन दैट लेटर. जो लेटर होती है कि जाकर अपना मेडिकल करवाइए, वो लेटर लेके आपको अपने सेम पैनल फिजिशियंस के पास जाकर अपना मेडिकल करवाना होता है. दोनों ही वैलिड हैं, अपफ्रंट और पोस्ट फाइलिंग मेडिकल एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, दोनों की टेस्टिंग सेम होती है, सिर्फ प्रोसेस डिफरेंट है. तो जितने भी बच्चे non-SDS वाले हैं वो बिना अपफ्रंट मेडिकल एग्जामिनेशन के फाइल लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि non-SDS फाइल में मेडिकल इनिशियली सबमिट करना मैंडेटरी नहीं है, पर SDS फाइल वाले बच्चे बिना मेडिकल की फाइल सबमिट नहीं कर सकते हैं. सो आई होप इट्स क्लियर. Sarvagna is saying 12 NIOS board completed BBA. Are there any hurdle while applying for visa? No, not at all, Sarvagna, because your recent studies, which is your BBA, is completed in regular. So there is absolutely no hurdles in getting accepted to any university or college in Canada. You should be really good to go. It all depends upon your IELTS or English proficiency scores. Right. So for students who are waiting for fall 21 intake, we still have a lot of time, and we are expecting that just like there's lockdown opening in phases happening across the country, we are hoping that it will also open very quickly for you. Biometrics should also be the next ones to open, or medical should be the next ones to open. So we're expecting that in 15-20 days, we will get some news on medicals and biometrics. So the SDS students especially, you have to submit your medical while filing. So we have to wait. Gurvansh, yes, old liquid funds are not, no, old liquid funds we have to show. New liquid funds we shouldn't show. So you should show funds at least 4 months old, because if you show a bank, suppose you have a bank balance of 8 lakhs and these are 4 months old funds, like before 4 months they were in your bank, it means you have a stability. If you have a 8 lakhs bank balance and you put that amount only in last 2 months, means the visa officer will understand that you put it on purpose for showing funds to the government. Then it will be a negative impact on your file. So
it's always preferred that you show all liquid funds. There is basically no alternative for financials. If you're applying a non-SDS file, for a non-SDS file, proof of financials is extremely, extremely important. If you want to apply in the same program, first you have to, if you have a refusal, आपको देखना पड़ेगा किस reason की वजह से आपका refusal आया है. Gurvansh, you should go for filing ATIP, or which is also very commonly known as CAPES. Please read about this on CIC website, and you will get the real reason for refusal. Please be a little patient. Defer your offer letter if you want to wait to collect some funds, and file for ATIP or CAPES and get the real reason for refusal. And this will help you make a better decision whether you should apply to the same program or not, because applying to the same program depends on why your case was initially refused. So we cannot comment on that because obviously we do not have access to your file, but अगर आपका किसी वजह से refusal है तो आप पहले उस refusal की reason को find out करिए. So student is asking, I have shown 1,34,000 in my account time filer, but now I use 50K from the fund. Now what should I do? Should I redeposit 50K? So can you please tell me when did you lodge your file, and what other funds have you shown? If there are other people who are sponsoring you who have shown a lot of savings, then 50,000 is not going to matter because वो collectively आपकी savings देखते हैं. अगर आपको बहुत टाइम हो गया है अपनी फाइल लॉन्च की और अगर अब आपने 50,000 निकाल भी लिए हैं, so it doesn't really matter. But if recently launched your file and then taken out 50,000 and you have no other supporting document for showing funds, then it's not ideally right to take out money. Okay, so then if they've given you poor academics, Gurvansh, in core subjects, then you might look at a different program. Please don't choose a very technical program. Choose an easy program that can go with your low academic score. ये बहुत ही common reason है poor academics का जो आता है. आपकी SOP बहुत strong होनी चाहिए. अगर आपकी SOP strong नहीं है तो low band score और low academics वाले बच्चों के visa आने बहुत difficult हैं. It's okay, just 10th May को आपने फाइल लगाई है. I'm not too sure आपने क्यों फंड उसमें से निकाला है. I will suggest कि आप सिर्फ 50,000 डायरेक्टली आप डाल भी रहे हैं, गुड है. आप कंटिन्यूसली उस अकाउंट में फंड्स को डालने की कोशिश करिए. जो आपकी फाइल में डॉक्यूमेंट चला गया है वही माना जाता है. That's very a small little probability के 1,34,000 का amount back check हो सकता है. So don't worry much about this. GIC paid है, fees paid है, income tax returns या financial stability के लिए कुछ documents supporting दिखाएं, then you are good to go. Ranbir, it is not, you've just got a correspondence letter for biometric validity. Sometimes you get results right 2 days after your biometric validity letter. You might also get your results tonight. It is sometimes as quick as that, but some students have waited for 1 month after biometric validity letter as well. But usually 2 to 3 days में आ जाता है. Yes. Ramphal, for biometric request letter that has come, I'm sorry, for the request letter that has come for those 10 colleges, there are just 2 or 3 cases. The rest of them are all for other institutions. So we are expecting some more request letters to come in the coming days for those institutions. And once that happens, I think it will be much easier for students to take further decision. So if you're still waiting and you're studying online, you may choose to wait for some more time. But there is no guarantee on the frequency of these letters, right? So thank you all for joining in today. And if you have any questions, you know our email ID. Please feel free to message or email. If you have PT, then financial documents is all that matter in your file because yours is a non-SDS case. Yes, Gurvansh, that's going to be very positive for your case because it's an Ontario school board and it is equivalent to OSSD diploma. 12th standard diploma is equal to our grade 12 in India. So that is definitely a positive thing. However,
any visa result is not just dependent on your only academics or only SOP or only financials. It's a mix of all these factors, and you should always really try to bring about a very strong statement of purpose and some good financials whenever you're filing a case with the Canadian High Commission, especially during the COVID times, because they just don't want to see your fees and GIC. They also want to see financial stability in the form of income tax returns or income certificates. No, Milan, they wouldn't get, because the letters as received by Quebec students are for a certain purpose. So students who filed in other Ontario provinces are not going to get this. Ranbir, you've shown good amount of liquid funds, so that is good to go, right? So if you have any more questions, we will be live again in a few days. Hold your questions till then, because we are going to also bring some new topics in discussion by then, because we are getting a lot of updates from the institutions as well as from IRCC all these times, and we are trying to bring to you every new update. So the request letters is a really important point. Please don't get confused. This is especially meant for Quebec students for now. We do not have any such intimation coming from any other province. So thank you for joining in today, and I hope to see you again in the next session that we will have. If you have any questions, drop in messages so that we can try to bring you the live on that particular topic. So good luck to all of you waiting for your results, and I'm hoping that we will have the biometrics and medicals operating very soon for Canada visas. Stay safe and please get vaccinated. It's extremely very important. Thank you for joining.